डियर स्टूडेंट्स, आई एम शौकत अहमद भट्ट, टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल जनसू। आज हमने 12th के लिए टॉपिक जो चुना है डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या ये भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन फ्रॉम द डेफिनेशन या डिफरेंशिएशन बाय एब इनिशियो मेथड। इसकी जो डेफिनेशन है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। दिस इज द डेफिनेशन by which we can find the derivative or the differential coefficient of a function. तो ये जो है this method is known as the differentiation from the first principle. Differentiation from the first principle. अगर हम कोई function लेंगे, let f of x is equal to x power n, means we have to find the differentiation of x power n by first principle. सबसे पहले f of x हमें पता है, सबसे पहले हम f of x plus h निकालेंगे, यानी स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे। therefore f of x plus h, यानी x के बदले है x plus h, यहाँ पे x के बदले लिखेंगे x plus h पावर n। फिर हम इनको ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, हम x f of x plus h minus f of निकाल, which implies f of x plus h minus f of x equal to x plus h power n minus x power n. Dividing both sides by h, or f of x plus h minus f of x divided by h is equal to x plus h power n minus x power n divided by h, letting h tends to 0, or which implies limit of h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। यहाँ पे हम लिमिट h tends to 0 लिखेंगे। लिमिट ऑफ h tends to 0 x plus h पावर n minus x पावर n divided by h। ये जो LHS है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f x divided by h, this is equal by definition f dash of x, or f dash of x equal to the limit of h tends to 0 x plus h power n minus x power n divided by h। इस h के बदले में लिख सकता हूं मैं x plus h minus x and x will cancel out, h will remain here, वो जो यहां है, which is equal to लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 के बदले में लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x plus h टेंड्स टू x and x will cancel out, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इसका मतलब हुआ लिमिट ऑफ x plus h टेंड्स टू x plus h पावर n minus x पावर n divided by x plus h minus x। दिस इज अ स्पेशल लिमिट। हमारे पास एक लिमिट है जो लिमिट्स में आपने पढ़ा होगा, which is equal to, this is equal to n x power n minus 1, using this limit of x tends to a x power n minus a power n divided by x minus a is equal to n a power n minus 1, n a power n minus 1। limit of x tends to a, x plus h tends to x power n minus a power n divided by x minus a, x plus h minus x, which is equal to n a power n minus 1, n x power n minus 1।
हमारे पास फंक्शन थी x पावर n, इसका जो हमने डेरिवेटिव है वो निकला n x पावर n minus 1. This is the differentiation of x power n by first principle. हम एक और एग्जांपल लेंगे, वो हम निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हम एक कांस्टेंट लेंगे. Let f of x is equal to c, say constant. Give a small increment which implies f of x plus h. x के बदले है x plus h, यहां पर x नहीं है वो भी c के बराबर होगा. Now difference, therefore f of x plus h minus f of x, which is equal to c minus c, which is equal to c minus c, which is equal to 0. Now f of x plus h minus f of x divided by h is equal to, यहाँ पे 0 है, minus 0 by h, और f of x plus h minus f of x divided by h is equal to 0. Taking limits h tends to 0, which implies limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h is equal to, यहाँ पे h 0, यहाँ पे 0 है, 0 ही लिखेंगे. This LHS by definition is equal to f dash of x, which implies f dash of x is equal to 0. Thus, if fx is a constant, say c, therefore f dash of x is equal to 0, because differentiation of every constant function is 0, which we proved by the first principle. Dear students, this is sufficient for today. Thank you very much.